Welcome to the Avan channel. Today I receive HP Probook 445 G8 with trackpad problem. As you can see, the trackpad is not working. Mousepad is not working. It's very common problem in Probook. Remember, first disconnect the battery. As you can see, the mouse pad strip and the motherboard side jack. Beside this jack, you find the fuse. Mostly the fuse is damaged. That's why the trackpad not working. I'm going to measure the fuse. As you can see, the fuse is not working. We need to replace this fuse. If you don't have the fuse, you can jumper it. I'm going to jumper this fuse for checking purpose. Later on I replace the fuse. Let's check the voltage. Fuse input 3.3 volt, fuse output 3.3 volt. Mouse fuse is working now. As you can see, the mouse is working now. Now in हिंदी, मेरे पास ये HP ProBook 445 G8 थी. उसमें प्रॉब्लम थी कि इसका माउस नहीं चल रहा था. तो इस वाले मॉडल में HP में ProBook में और लीड बुक में काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि जो माउस है वो चल नहीं रहा होता. रीज़न ये है कि उसका जो फ्यूज़ लगा होता है वो कई दफ़ा ख़राब हो जाता है. तो इसमें भी यही मसला था. इसका जो फ्यूज़ था वो डैमेज हो गया हुआ था, तो चल नहीं रहा था. अभी मैंने उसको आर्जी तौर पे जंपर कर दिया फ्यूज़ को. ये इसका जो फ्यूज़ है इसको मैंने जंपर कर दिया और ये चल गया. अभी मैं इसको बाद में इसको रिप्लेस कर दूंगा फ्यूज़ को दूसरे फ्यूज़ से. ये सिर्फ चेकिंग पर्पज़ के लिए मैंने कि चल रहा है माउस या नहीं चल रहा.
वाकई फ्यूज़ का मसला है या नहीं, इसलिए मैंने इसको जंपर किया चेक करने के लिए। जैसे मैंने जंपर किया, अब ये वोल्टेज उसके 3.3 वोल्ट आ रहे हैं और ये माउस चल गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।